President of India expresses pride in citizens who exemplify ideals of love. President of India, in a recent tweet, expressed her pride in the citizens of the country who promote ideals of love and respect. She specifically mentioned individuals like Belly and Bowman who showcase such values in their actions towards their fellow countrymen. The President also conveyed her heartfelt respect towards them. Indian government official highlights importance of nature and animals. प्रकृति और मानवता के बीच एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। ये रिश्तों की पवित्रता ग्रामीणों और आदिवासी समाज में अभी भी दिखाई देती है। अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट व्हिस्परर में An Indian government official, in a video message, talked about the importance of showing respect towards nature and animals. She mentioned how the environment she grew up in always instilled a sense of appreciation towards the natural world and its creatures. She also spoke about how elephants hold a special place in her heart, and how they have a gentle nature and do not harm others. Culture of respecting nature is integral to Indian identity. The official further highlighted how the culture of respecting nature has always been a fundamental part of Indian identity. She stated that in India, nature and culture have always been intertwined, and have nourished each other. By showing reverence towards nature, Indians have preserved their cultural heritage and have continued to prosper. मैं जिस परिवार से या जिस संस्कृति से आई हूँ और पली बढ़ी हूँ, वहाँ प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति सम्मान का भाव मैंने देखा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रहने वाले हाथी भी मेरे जन्म स्थान के क्षेत्र से गुजरते रहते हैं। सभी बच्चों को हाथी बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे भी बचपन से ही हाथियों से लगाव रहा है। वे अकारण किसी भी तरह का नुकसान नहीं करते हैं। जब ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का विश्लेषण होता है तो यही पता चलता है कि हाथियों के प्राकृतिक आवास या आवागमन में अवरोध पैदा किया गया है। अतः इस कॉन्फ्लिक्ट की जिम्मेदारी मानव समाज पर ही आती है।